सो हेलो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में वी विल लर्न कि हम एक चेस का गेम ड्रॉ कैसे होता है। पिछली वीडियो में वी लर्नड हाउ डू यू विन अ गेम इन चेस। सो देयर आर टू रिजल्ट्स पॉसिबल, वन इज अ ड्रॉ एंड द सेकंड इज अ विन। सो यहाँ पे वी विल कवर द डिफरेंट वेज जिससे एक गेम आप ड्रॉ कर सकते हैं। So let's come to the first, the most easy way to draw a game. वो तब होता है when both the players mutually agree to a draw. When आप ऐसा समझ लीजिए कि when both the players think that there is no point in playing the game further, या तो फिर that किसी को दूसरे से ज़्यादा कोई advantage नहीं मिल रहा है. So in that case, both players can mutually agree and game draw हो सकता है. The second way is stalemate, जो हमने cover कर चुके हैं हम. So I will add the video link in the description. I would recommend you to go and look at that video. वो ये playlist में covered है. अब तीसरे में आते हैं, वो है draw by repetition. तो draw by repetition क्या होता है? It is very simple. जब आपके board में एक same position 3 बार आता है, so then you can claim a draw by repetition. सो विदाउट गोइंग फर्दर डीप इनटू इट, हम एक एग्जांपल के द्वारा ही समझते हैं. सो इट इज इन दिस पोजीशन वाइट की मूव है. हम देख रहे हैं कि ब्लैक मेट इन वन थ्रेटन कर रहा है. ये क्वीन यहाँ पे आके मेट देगा. सो लेट्स से कि यहाँ पे वाइट खेलता है क्वीन G2 टू स्टॉप दिस चेकमेट. नाउ लेट्स से ब्लैक प्लेज क्वीन टू B5 attacking this pawn on A5. So what white does is white again goes queen D5, offering a exchange of queens, because अगर यहाँ पे queen steal हो सकती है, then the white pawn can queen, like it has a shorter route. So black वापस queen B7 आता है, queen B2 आता है, बोलता है कि भाई मुझे G2 में तुम्हें checkmate करना है. So what white does, white again comes back and black is adamant कि मेरे को वो pawn लेना ही है. So over here दो बार white queen G2 आ चुका है. So before moving the queen again to the G2 square to defend the checkmate, white can claim a draw saying that hey देखो, अगर मैं queen यहाँ पे खेलता हूँ तो 3 बार ये same position आ गया है. Like it's like a image capture. अगर आप देखो, this was the first time when it happened. Then both the queens came here. Then second time क्या हुआ, हमने queen G2 खेला. Third time when we play queen G2, we can claim a draw before playing the queen, and even after playing the queen. अगर हम कभी भी अपील करते हैं टू द आर्बिटर, वैसे ऑनलाइन गेम्स में तो अपने आप थ्रू इंजन इंजन डिटेक्ट कर लेता है, बट इन एन ओवर द बोर्ड गेम यू हैव टू go to the arbiter and claim that that this position has come 3 times. Then they will do their checks and they will give a draw. So the next way of how to draw a game is by perpetual check. As the name suggests, this is very जैसे नाम suggest करता है that when you are giving a check to your opponent and the king has no square to escape but only one square, and you can keep giving checks जिससे कि that वो game endless चलेगा. So यहाँ पे भी क्या होता है that यहाँ पे white की move है, white is a complete rook down. We can see that यहाँ पे ब्लैक के पास ये जो रुक है वो एक्स्ट्रा है, एंड ऑल्सो ही इज completely lost. But उसके रेस्क्यू में क्या है that he has this check, and black has no way of defending this check, और कोई तरीका नहीं है but to move the king back to G8, and white will keep giving checks like this. So ये हो गया draws, draw by perpetual check. So whenever you are losing or when you are down in material, this is one way that people often try and like जब आप देखते होंगे कि when people are losing, they always try to find resources कि कैसे मैं perpetual check कर लूँ, या कैसे मैं ऐसा कोई move ढूंढूं जिससे कि I can make my opponent ऐसा कोई check do where he has no escape route, and you can get away with a draw by perpetual checks. And the next two ways of draws are very similar, I would say. The next one is insufficient material. जब you do not have sufficient material to checkmate your opponent. So यहाँ पे we can see that that white has an extra knight but there are no other pieces on the board. तो ये गेम ड्रॉ हो गया बिकॉज आप एक घोड़े के साथ अपने ओपोनेंट को चेकमेट नहीं कर सकते. सो insufficient material generally happens जब किंग वर्सेस किंग होता है. अगर मैं ये नाइट हटा दूं
तभी भी ये ड्रॉ होगा। अगर मैं नाइट की जगह यहाँ पे एक बिशप डाल दूं, देन ऑल्सो इट्स अ ड्रॉ। सो बेसिकली व्हेन इट्स किंग वर्सेस किंग, और इट इज किंग एंड नाइट वर्सेस किंग, और किंग एंड बिशप वर्सेस किंग, तब ड्रॉ होता है। एंड द लास्ट वे ऑफ ड्रॉ इज बाय 50 मूव रूल। व्हाट द 50 मूव्स रूल सेज इज दैट अगर आपने 50 मूव खेले without any piece capture or pawn push, then it's a draw. So again, no, when you are playing over the board, and this often happens in situations when you are playing a king and rook versus a king, rook, and a knight. So this is a theoretical draw. But even let's say आपके ओपोनेंट इज ट्राइंग टू पुश फॉर अ विन, कि आप कहीं से ब्लेंडर कर लो and वो आपको चेकमेट कर ले, सो इन दैट केस after 50 moves you can claim a draw, because the only piece that can capture is अगर आप अपना rook उसके knight के लिए देते हो, then you are a complete rook down and you will lose. But if the only way for you to draw is to exchange the rooks, so you will keep trying to exchange rooks for the next 50 moves. अगर you are able to exchange the rooks, then you will lead to a position like this where there will be insufficient material. So 50 moves का जो रूल है, ये बेसिकली बनाया गया है बिकॉज अगर 50 मूव से आप ना ही कोई पॉन पुश कर रहे हो, ना ही आप कोई एक्सचेंज कर रहे हो, इट मींस दैट गेम में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. सो इट टू टेक केयर ऑफ सच सिचुएशंस जहाँ पे आपके गेम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बट यू आर जस्ट कीपिंग ऑन प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, सो इसके लिए 50 मूव्स रूल बनाया गया है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे एक गेम चेस में ड्रॉ होता है. So let me just summarize it for you in brief again, the different ways of drawing. First, draw by agreement. Second, stalemate. Third, repetition, जब बोर्ड में सेम पोजीशन 3 बार आ जाती है. Fourth, perpetual check. Fifth, insufficient material. And the sixth and the last is 50 move rule, जहाँ पे 50 moves तक if there is no pawn movement or any piece capture, then you can claim a draw. So this was the different ways how a chess game draw होता है. Thank you.